You might remember there's been a focus on the volley between the Aam Aadmi Party and the BJP in the capital over the last few weeks, with the BJP targeting the Aam Aadmi Party over the liquor excise policy. You'll remember the Aam Aadmi Party had a few weeks ago introduced a new excise policy, a new liquor excise policy that would have involved private players instead of government players. They then rescinded that policy, and the BJP has since targeted them. They've said that they were trying to use the liquor policy to take money from private players. Now, since the start of that controversy, we've seen a back and forth between both these parties go on over the last few weeks. Now we're seeing a protest taking place in Lakshmi Nagar in the capital. My colleague Anshul is bringing us more of these developments. Anshul, we know that these protests are taking place outside the Deputy Chief Minister Manish Sisodia's house, but why these protests today morning? What's the context? And it seems as if they've turned violent. Tell us more. So yes, Toya, the battle of perception is continuing in the national capital, and that is the reason why we are seeing that the BJP is now amping up its pressure on the Aam Aadmi Party government. And in line with that, today, if you could see in the visuals behind me, I'm standing at the Lakshmi Nagar metro station where BJP MP Manoj Tiwari has arrived. He's addressing the workers over here who have gathered over here. And the main point of contention here being they demand the resignation of Manish Sisodia, since he has already been raided by the CBI. The CBI has already registered a case in this entire liquor scam, alleged liquor scam is what they say. So yes, the BJP leaders are ramping up its pressure and making sure not only Manoj Tiwari but also other senior BJP leaders are protesting all across the national capital today. They are making sure that the voices are heard and the trial of the Aam Aadmi Party. सिसोदिया जैसे भ्रष्टाचारी को कब सजा होगी? मनीष सिसोदिया जैसे लुटेरे को अरविंद केजरीवाल क्यों बचा रहे हैं? और जो खजाने की लूट हुई है उसको अकाउंट में कब तक जमा करेंगे? अब तो स्टिंग भी आ चुका है। ऐसी स्थिति में मेरा मानना है अरविंद केजरीवाल को स्वयं जवाब देना चाहिए। वो तो अभी दिल्ली छोड़ करके हिसार चले गए। हिसार गए हो तो शराब घोटाले का वहां भी किसी मीडिया को बता दो कि इसके ऊपर भ्रष्टाचारी पर क्या एक्शन होना चाहिए। आप वही अरविंद केजरीवाल है ना जो कहते थे कि एक भी वीडियो दो तुरंत हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आज वीडियो आया है और उसके बाद भी शराब घोटाले का जवाब नहीं दे। अरे कुछ तो जवाब दो। पंजाब में तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो आज सारे सरकारी अधिकारियों को, उसी का जवाब दे दो। SYL से पानी कैसे छूटेगा, उसी का जवाब दे दो। तो ये रेवड़ी और बेवड़ी की सरकार न ये शराब घोटाले पे जवाब दे पा रही है और न तो अपने जहां शासन कर रहे हैं वहां का तनख्वाह कैसे मिलेगा, SYL का पानी कैसे मिलेगा, सब पे चुप्पी है। तो ये अपराधी चुप हो सकते हैं, जनता चुप नहीं होगी। कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली के लिए, इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। अब बताओ, स्टिंग आ गया है। आरोपी नंबर 13 के पिता का वो कह रहा है कि ये अपना कमीशन इसलिए बढ़ाए कि इनको कमीशन चाहिए। उसके बाद भी यही विकास है, यही अच्छा काम है। अगर इसको अरविंद केजरीवाल अच्छा काम मानते हैं तो याद रखिए अपराधी कितना भी सयाना क्यों न हो उसको कानून उसके तक पहुंचेगा, जनता सड़कों पे। अभी हम लोग दिल्ली के लोगों को शराब घोटाले पर और अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर, मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी न होने पर हम लोग सड़कों पे हैं। ये अपराधी भले चुप हो जाएं, जनता चुप होने वाले नहीं है और जनता सड़कों पे है। कैसे और प्रेशर बनाएंगे सर? आज आप प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, कैसे और प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी पे लग नहीं रहा? देखो, ऐसे लुटेरों को जल्दी से गिरफ्तार किया जाए, आराम से करेंगे। ऐसे लुटेरों को जल्दी से बर्खास्त करने की भी कार्रवाई हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी जवाब नहीं दे रहे, हिसार भागे हुए हैं। शराब घोटाले का जवाब दो, SYL का पानी कब आएगा इसका जवाब दे दो। वेतन नहीं मिल रहा है पंजाब में, इसका जवाब दो। शराब घोटाले पे कितना भी चुप रहो, जनता जवाब लेकर रहेगी। So that was Manoj Tiwari as he continues with his march along with the BJP workers. He is making sure that the right noises are being made by the BJP, because the main allegation on the BJP has been that they do not make the right noises, and the main issue
of Liquorgate was not highlighted in the proper manner, and that is the reason why we are seeing that the entire top brass of Delhi BJP now hitting the roads and making sure that they make the exact right noises and corner the Aam Aadmi Party, who's been trying to change the battle of perception, because as Manoj Tiwari right now said, that they are trying to divert from the topic and very less discussions are actually happening on the Liquorgate. But yes, other issues are being discussed. We heard just day before yesterday how Aam Aadmi Party came out and alleged that the CBI officer who committed suicide was because of pressure that was built by the BJP to in fact take in Manish Sisodia to build an airtight case against Manish Sisodia. So yes, all these issues are being talked about, but the BJP is now trying to make sure that the main point of focus in this entire matter, that is the Liquorgate, that should be highlighted and should not be vanished in all the noises that are being made over here. So yeah.